governance, law and order, authority. And what is nation state? We still have to do. Yeah. Religion, no. We are not based on religion. We are based on secularism, constitution. इंडिया को पॉलिटिकल नेशन बोला जाता है. पाकिस्तान टाइप नहीं या फ्रांस टाइप नहीं. हम लोग का लैंग्वेज और ये सब नेचुरल बेसिस नहीं है. वी हैव टू बिल्ड आवरसेल्व्स एज अ नेशन. India is called as political nation, means politically we have to bring people together. And what is the means of that political nation? Constitution, federalism, centralized planning we had earlier. ठीक है? और कुछ तो चलो. Hello. Yes. Ma'am, Yeah. ma'am, there is one question. Yeah. Ma'am, actually, like yesterday we discussed about the nation state concept. And so, ma'am, is it like nation state is a sovereign state? Can we say that? Like, Sovereign state? yes, ma'am. I will discuss. I'll tell you. Okay, okay, ma'am. So first of all, yesterday I just told you to understand the concept state, and at different times there can be different types of authorities. In different places there can be different types of authorities. So I gave you an example of caste as a state in India. Fine. And in Europe, first emerged city-states, then Roman Empire emerged, and then emerged nation-states. So still I have not discussed, I think, nation-state completely. So nation-state, I told you that in medieval times, there used to be bigger entity, Roman Empire, and Roman Empire disintegrated, and smaller units, bigger than city state but smaller than the empire came. That is nation state. Nation state needs to be understood very properly. Fine. Nation state means where the basis to give the basis to recognize the state or the criteria of statehood is nation. And nation is what? Set of people who are integrated together by some bond. What is that bond? That can be culture. And nation is always an emotional type of a concept, an emotional bonding, some type of feeling of fraternity. Fine. So right now, if you see in Europe, at present, though everybody is going back to nation-state concept, but in Europe, we also see European Union. European Union is what? It is transnational institution. Transnational means transcend the nation state. So in EU, there are around 19 countries which have common currency. So common currency means they have EU currency, euro. They have surrendered their national currencies. So what we see in Europe, city-state, Roman Empire, nation-state, transnational states, again they are going back to city-states, again they are going back to nation-state. So nation-state is a historical concept. At different time, different types of states come into existence. Now he was asking the question, nation state means sovereign state,
So every state means sovereign state. Fine. So state means sovereignty only, because sovereignty is absolute power या supreme authority. So there cannot be any state without sovereignty. Okay. So nation state is also a sovereign entity. But why this confusion arises? Why this question he has asked? Because it is like when you study elements of a state, you study about 4 features. Fine. So, and the most essential element is sovereignty. So, students think that only nation state is sovereign. No, state itself means sovereignty. But how this historically gets connected? Because in medieval times, the theory of two swords was established. So, two swords means two kings. Who were these two kings? One was church and other was a king. And it was not clear which one is supreme, who will have the final voice. So, in modern times, by Treaty of Westphalia, it was settled that church will not have the final authority. Final authority now will lie with the state. That is why it is described that it is a sovereign state. ठीक है? तो nation state का मतलब यही है where statehood is given to a group of people who can establish themselves as a nation. Nation means as a race. Race means as a comm, as a community. And those who can tell that they can stay together. And that is why, what is the principle of statehood in international politics? National self-determination. So, any nation, any race, any ethnic group, if they can establish themselves as a separate or as a nation, that becomes a ground that they can demand a recognition as a separate nation. तो इसीलिए क्या किया जाता है? Separate nation. There are demands for separate statehood in so many places. It is not just in Kashmir, it is also in Balochistan. Fine. There is also the demand for separatism in the Xinjiang region of China, where Uyghur Muslims live. There is a separatist demand in China, in Tibet. Okay. So normally states do what? To challenge this, they will go for the policy of shifting the population, which in political science language we call it as internal colonialism. ठीक है? तो जैसे आप नेशन एज अ कॉन्सेप्ट है and you want that you should be recognized as a nation, okay, and then you will demand for national self determination. हम खुद बताएंगे हम किसके सरकार के अंडर में हैं. ठीक है, तो ये नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन हो गया. नाउ nation is always, I told you, original nationalism. It is an exclusive concept. Suppose in Kashmir and in Kashmir Valley, people from different religions live. Suppose they, not just Kashmiri Muslims, but
Kashmiri Pandits also live. Suppose in Valley region, people are from Sunni sect, fine. But in Ladakh region, they are most probably Shias, fine. And then there can be Shias in Ladakh, like in Kargil, it is the Shias, and in Ladakh district, Ladakh has two major districts. There are Buddhists, and then there be Sikhs also, because Kashmir has a history. Kashmir became a state by Treaty of Amritsar, right? So this all community, if all communities are living there, will Kashmir get a potential? Will there be a potential for nationhood? No. So to strengthen the claim, what can happen? There can be an ethnic cleansing. जैसे लैंड को क्लीन कर दो फ्रॉम अदर एथनिसिटीज एंड अ सिंगल एथनिसिटी रिमेन्स. तो अब कश्मीर एक्सक्लूसिवली, लेट्स से वैली बिकम्स एक्सक्लूसिवली lived by the Kashmiri Muslims of a particular sect. So that will strengthen the claim. But if all will stay here, then their claim will get diluted. Now, what states will do? States will have a policy of sending people here. Fine. You have to make people of different ethnicities settle here. Fine. So forget India. If we talk about Bangladesh, fine. In Bangladesh, or forget Bangladesh, let's talk about China. China in Uyghur region. What China will have? A policy of resettlement. China has different ethnicities. Main Chinese ethnic community is called Han Chinese. So China will go and ensure that this population starts settling in the Xinjiang region. Just like there is a demand for separation in Kashmir, in India, there is also a demand for separation in Xinjiang and in Tibet. Fine. So wo settlement. Again in Baluchistan. So Baluchistan, government of Pakistan will do what? They will start settling the people from other ethnic communities like Punjabis and Sindhis, Pashtuns in this particular region. So you must be knowing about Afghanistan crisis. So Afghanistan crisis happened. Refugees will start coming. Refugees are Pashtuns. Pashtun refugees are primarily settled in Baluchistan region. Why? So that the Baluchi claim for a separate state can be diluted. Similarly, in case of India, more than Article 370, the problem was Article 35A, which prevented the movement of the people. So now the government would want movement of the people from this region. So that is again a politics. One ethnicity will try to strengthen its claims, and the government who is opposing it will try to dilute these claims. So right now, especially since the end of Cold War, the most important issue in the politics has been the ethnic issues. Most important issues have been the migration issues, the refugee issues. For example, if I talk about Myanmar,
So in Myanmar also what we see, ethnic cleansing taking place. The region, Rakhine state, where Rohingyas have been living. So they have been pushed out. Fine. So Rohingyas and every state is playing right now in politics. The most important medium for doing politics is people. Fine. So you are using the people, you are using ethnicities. Ethnic politics becomes main politics at present time. Okay. So my purpose is that you understand the concept of nation and the politics of nationalism little bit, and why this will always be violent. It will always be with bloodshed because it is about exclusion. It is about ethnic cleansing. It is politics of ethnicity. So throughout political science syllabus, I'll keep on explaining this particular idea, and there are various ways and contexts in which the concept of ethnicity has to be, or nationalism has to be understood. So right now this is one way we have understood nation state, and I think you should write down the definition. Definition of nation state, right? When nation is seen as a unit of governance or statehood, unit of governance or eligible for statehood, it will be called as nation state. जैसे डिमांड फॉर खालिस्तान, तो अब खालिस्तान में फिर क्या है, ड्यूरिंग द वेरी हाई टाइम ऑफ militancy in Punjab, again there was a ethnic cleansing that has happened, and you want to go for homogenizing the area. ठीक है? And if you want to avoid it, you will ensure that it does not get homogenized. Okay? So basis is statehood. Now next point you write, nation state is a historical idea. Historical idea means we were not living in nation state from the very beginning, and it is not necessary that in future also we will be living under the nation state. It emerged at a point of history. Right now we are so much used to that idea that we can't even imagine living in something, some different form of a state other than nation state, but it is just a historical idea. It emerged at some point, it may disappear at some point. Okay, so it's a historical idea. Iska matlab just right, it means it has not been there since beginning, right? It emerged at some point of time and it may disappear. Next point, right? It is a European in origin.
nation state is European in origin. It emerged in Europe. ठीक है. Next लिखो, in rest of the world, rest part of the world, nation state emerged due to colonialism. ठीक है, अंडरलाइन करो colonialism और ऐसे लिखो, राइट, colonial masters introduced modern states in non-Western world. Second point, against colonialism, emerged nationalism in colonies. देखो, people fighting against colonialism demanded their right to self-determination. अंडरलाइन करो, right to self-determination. What was the condition? लिखो, right, this was conditional, अंडरलाइन करो conditional, और लिखो what was the condition put forward by, what was the condition put forward by the colonial masters. ठीक है, भी ऐसे एरो करके लिखो, द कंडीशन वॉज टू एस्टैब्लिश दैट दे फॉर्म अ नेशन. आप लिखो, हेंस फ्रीडम मूवमेंट्स in colonies were also what? हमारे फ्रीडम मूवमेंट का दूसरा नाम क्या है? नेशनल मूवमेंट. were also नेशनल मूवमेंट्स. हर जगह फ्रीडम मूवमेंट नेशनल मूवमेंट है? नहीं. लेकिन हम लोग क्या है, फ्रीडम मूवमेंट. हो सकता है इफ वी वुड हैव बीन नेशन अर्लियर वी ओनली हैड टू गो फॉर द फ्रीडम मूवमेंट. ठीक है, तो इसलिए वो नेशनल मूवमेंट बन गया. ठीक है, अब लिखो, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश इन इंडिया ऑलवेज challenged the status of Congress as a representative of nation. ये भी एक पॉलिटिक्स होती. जैसे पैलेस्टीनियन नेशनहुड है, you know little bit about it. Palestinians are divided into two territories, Gaza and West Bank. Gaza is controlled by Hamas. West Bank is under Fatah party. Ab they want statehood, and if Americans do not want, they will say, who is your representative? Hamas will say, I am the representative of
the people of Palestine, and the Fatah party will say, we are the representative. So Britishers used to say, who are the representative? Their policy will always be divide and rule. Fine. So the question was, they never said that Congress representing the voice of all the Indians. And when the British understood that the unity is going, they started the policy of divide and rule. So in Swadeshi movement, they got the taste that Hindus and Muslims can be together. So in 1906, they orchestrated the establishment of Muslim League, and they are the one who started strengthening this particular idea that there are not one nation, two nations. Fine. So that is also a part of politics. So the main challenge was what? To establish themselves as a nation. तो ये हो गया politics of nationhood. So nation is a new concept. We are not so much comfortable with that. We are more of a regional people. We are more of a community based people rather than nation. It's a Western idea. And in most of the countries in third world, the concept of nation is a failed concept, because in almost every country of the third world, what you see? Insurgencies, secessionism. You can talk about Sri Lanka, you can talk about Bangladesh, you can talk about Pakistan, India, entire Africa. Every day they have a new boundary. Some new state will keep on emerging. Fine. So it's a Western idea. So first thing you should understand, nation state means a modern European idea introduced in rest part of the world by the colonial masters, and has not seen such a success the way it had been there in Europe, because our history, it has not been something natural, it is something imported from outside. Okay, and nation state emerged in modern times, so we call it as a modern state. Most universal form of state around the world is nation state. ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो. या करेक्ट. it is called as derivative of colonialism. अगर हमारे यहाँ colonialism नहीं होता, बिकॉज आप यूनाइट किसी अगेंस्ट में होते हैं पहले, तो कोई और चाहिए होता है तब आप यूनाइट होते हैं. और ये तो मॉडर्न टाइम्स में, क्योंकि नेशनलिज्म ये सब मॉडर्न आइडियाज थे, उसका लिंक है राइज ऑफ कैपिटलिज्म से, तो वो जब आएगा तभी ये सब चीजें आएंगी. ठीक है, जो अभी हम बताएंगे. तो फिलहाल एक चीज लिखे. हेलो मैम. यस मैम, कैन वी सी एथनिसिटी एंड रिलीजन सेम हियर? एथनिसिटी, रिलीजन, नेशन इज सेम. एनीथिंग रिलेटेड टू आइडेंटिटी. एथनिसिटी ही तो होता है नेशनलिज्म. ओके, थैंक यू मैम. या तो अब हम लोगों को एक कंसेप्ट समझना होगा, मॉडर्न स्टेट किसको हम कह रहे हैं, और उस चीज को समझना है. तो पहले लिखो, ऐसे लिखो, सिंस नेशन स्टेट इमर्ज्ड इन modern times, it is also called as modern state. अब इस क्वेश्चन का आंसर दो. What was the form of state in Europe in ancient time? City state. Form of state in Europe in medieval times? Empire. So form of state in Europe in modern times? Nation state. Form of state in Europe after Second World War? Transnational, in the form of EU. ठीक है, तो स्टेट के फॉर्म
चेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मॉडर्न स्टेट। तो अब उसकी खास बात क्या है, मॉडर्न स्टेट कैसी एंटिटी है? डू यू नो दैट गांधी वॉज अगेंस्ट स्टेट? फाइन, but Gandhi was not against all states, he was against modern state. Why he was against modern state? Because modern state is based on violence. Okay, modern state represent centralization, and modern state is a territorial idea. modern state का सबसे important element होता है territory. टेरिटरी, फाइन। तो स्टेट के साथ जुड़ा होता है नेशनैलिटी, नेशनैलिटी के साथ जुड़ा होता है आपका पासपोर्ट, पासपोर्ट में एक स्टैंपिंग होती है और बिना परमिशन के आप मूव नहीं कर सकते। लेकिन डू यू थिंक दिस प्रैक्टिस वाज देयर इन एंशिएंट टाइम? नो। तो ह्वेन सांग चले चाइना से कभी भी आ गए, आज आ सकते हैं? आज कोई चाइनीज इतनी आसानी से आ सकता है इंडिया? नहीं आ सकता है। अब तो वीजा भी नहीं दे रहे हम लोग, इज दैट क्लियर? लेकिन पहले क्या था? तो वाई गांधी इज अगेंस्ट? बिकॉज नेशन स्टेट creates boundaries, fine, and very idea of nation state is against Indian culture. What is our culture? Vasudhaiv Kutumbakam. So we don't believe in boundaries, we believe one world one earth, ठीक है। बट नेशन स्टेट तो बाउंड्रीज बनाता है, जमीन पे भी और दिल में भी, ठीक है। इसलिए नेशन स्टेट को कभी भी इंडियन लीडर्स ने प्रमोट नहीं किया। पहले इंडियन लीडर जो प्रमोट कर रहे हैं वो हैं अपने मोदी जी, वरना बाकी कभी भी नेशन स्टेट को प्रमोट नहीं किया। लेकिन फिर भी मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि कॉस्मोपॉलिटिज्म से उसको इग्नोर ना किया जाए, ठीक है। वरना इंडिया में कभी पॉलिटिक्स ऑफ नेशनलिज्म वाज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सॉरी आफ्टर इंडिपेंडेंस। वो बस अपना नया नया फेज है, ओके। तो अब मॉडर्न स्टेट की खास बात क्या है, उसको मॉडर्न स्टेट क्यों कहते हैं? तो सबसे पहली बात है, मॉडर्न स्टेट इज अ टेरिटोरियल एंटिटी। लिखो, मॉडर्न स्टेट इज अ टेरिटोरियल एंटिटी। अब टेरिटोरियल एंटिटी है मींस बाउंड्री, बाउंड्री मैटर्स, बाउंड्री का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। फिर लिखो, मॉडर्न स्टेट इज नोन बाय इट्स टेरिटरीज, फिक्स्ड टेरिटरी। Why Gandhi opposed territory? Should Indians support or as our culture support territories? बाउंड्रीज इसीलिए हम दे देते हैं। चाइना वालों को चाहिए अक्साई चिन, ले जाओ भाई, पीओके चाहिए ले जाओ, ले जाओ, हमें टेरिटरी से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम बिलीव ही नहीं करते उसमें, ठीक है। आप बिलीव करते हैं टेरिटरी की सैंक्टिटी में। टेरिटरी इंपॉर्टेंट है कि पीपल इंपॉर्टेंट? पीपल आर इंपॉर्टेंट, टेरिटरी नहीं इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम आसानी से दे देते हैं। श्रीलंका वालों को चाहिए कच्चा थी, वो ले जाओ। बांग्लादेश वालों को चाहिए मैरीटाइम बाउंड्री, भैया ले जाओ। हमको टेरिटरी से कोई लेना ही देना नहीं है ना, हम लोग तो उस दुनिया के लोग हैं, ठीक है। वी टेक इट लाइटली। वो तो बाहर वाले, इसलिए हम लोग को भी टेरिटरी टेरिटरी करना होता है, वरना हम लोग तो कहेंगे पूरा ले जाओ भैया, जो लेना है ले जाओ, ठीक है। लेकिन ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है टेरिटरी का, एंड वी आर नॉट कंफर्टेबल विद टेरिटरी बिकॉज टेरिटरी creates boundaries. Boundaries divide people, and the boundaries do not just, they are drawn
on the papers or on the land, the boundaries are also drawn on hearts. और वो खत्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. रेडक्लिफ लाइन वाली जो बाउंड्री, सोचो बाउंड्री नहीं होती इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो बढ़िया होता कि नहीं होता? नहीं होता. तुम आराम से जाते दिल्ली से, लंच करते लाहौर में, ब्रेकफास्ट करते काबुल में और डिनर करते दिल्ली में. वही तो बढ़िया दुनिया होती. तो बाउंड्रीज, एक बाउंड्री को हटा पाना इज सच अ डिफिकल्ट थिंग. सो we as a civilization do not believe in that boundary. Boundary was a European concept. Boundary was never our concept. But who created the modern boundaries of India? Modern boundaries में पहली boundary है McMahon line with China. Who created? British. Another boundary, Radcliffe line. Who created? British. Now it is in Pakistan, but a third boundary was the Durand line, British. Fine. Another boundary with Nepal, the Kali River and its eastern flank. Who created? British. So the boundaries for which we are fighting are not our natural boundaries. They are the colonial boundaries. And these boundaries, India has faced the border dispute with almost every neighboring country because of the boundary. So boundary is, for protection of boundary, you create army, you create nuclear weapons, everything. So that is, boundary is a very sacred concept. It's a territorial, fixed boundaries are important. Fine. So in Europe, how this fixed boundaries comes into existence? Because it was, let us say, a Roman Empire where everybody is living. Then the French speaking people, they said that from here to here, this is a land of French speaking people. And on that basis, they demanded national self-determination, and France became a separate state, Spain became a state, Portugal became a state. तो स्टेट, फ्रांस यूरोप से जब अलग, मतलब रोमन एम्पायर से अलग होगा, तो क्या बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो बाउंड्री है वो फ्रेंच नेशन स्टेट है. तो नेशन स्टेट की फीचर क्या है? टेरिटोरियल एंटिटी. तो अंग्रेजों ने अपने यहाँ जो देखा वही अप्लाई किया. उनकी भी कितनी समझ थी, ठीक है. तो अंग्रेज लोग आए ही थे ऐसी जगह से जहाँ बाउंड्रीज ही खींची गई हमेशा, ठीक है. तो उनका भी दोष नहीं है बेचारों का, ठीक है. तो वो अपना कॉन्सेप्ट हो गया टेरिटोरियल एंटिटी, ठीक है. अब सेकंड फीचर क्या होता है नेशन स्टेट का? लिखो, सेकंड फीचर इज सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी. सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी means, suppose French, Spanish, Portugal, Germans, Deutsch people and all, they are living, they are all under Roman Empire. Fine. So Roman Empire or any such system will be what? It will be a confederation. ठीक है. Confederation क्या होता है? Where different ethnicities are living together. Okay, a sort of a loose federation. Federation का concept क्या है? Opposite to centralization. Okay. Now you must have heard about USSR. USSR was a confederation
consisting of 12 republics, 15 republics, ठीक है, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, यूक्रेन एंड ऑल, तो सब क्या था, कॉन्फेडरेशन. तो रोमन एम्पायर क्या था, कॉन्फेडरेशन. ईयू क्या है, कॉन्फेडरेशन. सार्क क्या है, कॉन्फेडरेशन. सार्क तो वैसे है नहीं, लेकिन जब हुआ करता था तब आप उसको कैसे बताते हैं, कॉन्फेडरेशन. ठीक है. तो अगर यहां से अथॉरिटी यहां सेंट्रलाइज हो गई किंग में, तो वो क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी. लूज अथॉरिटी गेटिंग सेंट्रलाइज्ड एट वन प्लेस. तो मॉडर्न स्टेट रिप्रेजेंट सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी. Modern state means weakening of autonomy, centralization. Centralization, जैसे two centers of power emerged on Indian subcontinent, New Delhi and Islamabad. ठीक है. तो concentration. अब concentration जैसे हुआ in Pakistan, if you see Sindhis, Baluchis, Punjabis, etc., they are now to be governed from one center, Islamabad. In India also, Marathis, Punjabis, Tamils and all to be governed by one center, that is India, that is Delhi. So centralization, who introduced centralized authority in India? British. So it's a modern concept. So modern state means centralization. Gandhi favored decentralization. So Gandhi is against the state? No. But Gandhi is against modern state, centralized authority. Is that clear? तो अब next लिखते हैं कि you have written modern state represent centralization of authority. तो now centralization एक और लिखते हैं, third लिखते हैं एक feature modern state का. Modern state represent secularization of authority. Secularization of authority means, इसका मतलब लिखो, secularization of authority लिखो. In medieval times there were two centers of power. First लिखो king and pope. Pope और church, king and pope. इसको पॉलिटिकल साइंस में क्या कहते हैं, थियरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स. ओके, ऑब्लिक करके लिखो, सो कॉल्ड theory of two swords. Okay. Full stop, right? At the same time, between these two, church was more powerful. अब लिखो मॉडर्न स्टेट टेक्निकली स्पीकिंग comes into existence in legal terms by Treaty of Westphalia 1648. Treaty of Westphalia. Where is Westphalia? Germany. 1648. Treaty of Westphalia is the result of what? लिखो, ये भी लिख लो. Treaty of Westphalia
concluded 30 years of war in Europe. 30 years of war in Europe. 30 years of war क्यों हुआ था? Have you read world history? You know about 30 years? तो अब 30 years of war था, पहले समझो यूरोप में. War, Europe and Middle East, they are very adjacent. So in Europe, first of all, Christianity का rise है, and within Christianity, two sects emerged, the Protestants and Catholics. Again, between the Christians, after Christianity emerged Islam, and both are missionary religions, means both are expansionist religions. In both, conversion as a concept exists. Fine. So they came into direct conflict with each other. I was discussing about Turkey yesterday. Fine. So this 30-year war was a inter-religious war where politics and religion was mixed up. So Catholics were fighting against Protestants, Protestants were fighting against Muslims, Muslims were fighting against. This is how this Europe was in the 30 years of war. So Europe had a history of use of religion in politics. That is why the Britishers, they found that in India they can use this also as a instrument. तो ये एक तरीके का सिविल वॉर था. सिविल वॉर कब होता है? जब कंट्री में हो. तो अब वो रोमन एम्पायर में सारे लोग लड़ रहे, तो वो सिविल वॉर था. सिविल वॉर का मेन इंटर रिलीजियस वॉर था, जो खत्म हुआ इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में. ठीक है, तो आपने क्या लिखा है? 30 years वॉर. ठीक है, इसमें लिखो इट वॉज अ सिविल वॉर इन रोमन एम्पायर. primarily inter-religious war which was mixed up with politics. Next लिखो Treaty of Westphalia established that point number 1, only a state will have sovereignty or ultimate authority. ठीक है, it means they have rolled back religion. रोल बैक कर दिया, इनको कहा कि रोल बैक करो और घर जाओ. रोल्ड बैक द रिलीजन. रोल्ड बैक फ्रॉम वेयर? लिखे रोल्ड बैक फ्रॉम पब्लिक स्फीयर्स. and confined religion to personal sphere. एरो करके लिखो. रोलिंग बैक ऑफ रिलीजन का मतलब क्या हुआ? सेक्युलराइजेशन. रोलिंग बैक ऑफ रिलीजन्स मीन्स सेक्युलराइजेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर.
सेक्युलराइजेशन का मतलब क्या होता है? रिलीजन को रोल बैक करना, ठीक है। तो अब लिखो, राइट नाउ पब्लिक स्फीयर from where church is rolled back came under the absolute authority of the king. Underline करो king. King represents secular authority or religious? Secular. देखो, king means secularization of authority, rolling back of religion. ठीक है। अब ये कुछ कंसेप्ट नेशन स्टेट को आपको आ रहा है कैसे ओरिजिन हो गया। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो व्हाट इज द डिफरेंस इन नेशन स्टेट एंड एम्पायर। एम्पायर क्या होता है? एक ही देश में आपका बिजनेस और बहुत जगह बिजनेस होता, एम्पायर हो जाता है, मल्टीनेशनल होता है, ठीक है। तो एम्पायर अंडरलाइन करो, लिखो एम्पायर इज अ मल्टीनेशनल ऑब्लिक मल्टी एथनिक एंटिटी। मल्टी एथनिक मीन्स, लिखो विद इन एम्पायर पीपुल फ्रॉम different nationalities can exist. ठीक है, लिखो फॉर एग्जाम्पल अंडर ब्रिटिश एम्पायर there were different nationalities, Indians, Pakistanis, Egyptians. Okay, empire. अब लिखो empire represent diversity. It is culturally diverse. So India is basically technically empire or nation state? Empire. Or our nation state is at state level. That's why it is said that India has state nations. State में nation का principle apply किया गया linguistic states में, ठीक है। और nation state underline करो, nation state is what? Is it homogeneous entity? Technically, ideally, it is homogeneous, not diverse. So linguistic reorganization in India creates homogeneous entities in terms of language. Yes. No, same. Ethnicity को ही race कहते हैं. Ma'am, why we use different words, like there's some different context, or? No, they can be used interchangeably only. Race, ethnic group all represent that pure blood concept. It's same. Fine. अब एक और क्वेश्चन लिखो, नेशन क्या होता है? होमोजेनाइजिंग होता है। होमोजेनाइजिंग अगर होगा तो नेशन एक्सक्लूसिविस्ट है कि इंक्लूसिविस्ट है? एक्सक्लूसिविस्ट, उससे कुछ लोग कम कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो दुनिया में सबसे बड़े नेशनलिस्ट कौन था? हिटलर। तो हिटलर का पॉलिसी क्या थी? होमोजेनाइजेशन।
तो जो भी ज्यूज या ये सब थे उनको सीधे एक्सटर्मिनेट ही कर दो। उसको फेमसली बोला गया जाता है हाउ इट जूइश क्वेश्चन। ज्यूज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हर कंट्री के लिए यूरोप में, ठीक है। और एट्रोसिटीज अगेंस्ट ज्यूज वाज नॉट जस्ट लिमिटेड टू जर्मनी, इट वाज हैपनिंग एवरीवेयर। तो सारे लोग पूछ रहे थे ज्यूज का क्या करें, ठीक है। तो हिटलर से सलाह ली गई। हिटलर ने कहा ज्यादा कुछ नहीं करना है। हिटलर का आंसर था ज्यूस प्रॉब्लम है, खत्म कर दो, ठीक है, एक्सटर्मिनेट द ज्यूस। दैट वाज हिटलर्स सॉल्यूशन टू द ज्यूइश क्वेश्चन। That is why every country in Europe actually supported Hitler. Hitler was killing Jews since long, and nobody was, neither France was opposing nor Britain was opposing, because everybody wanted that to happen. And there was anti-Jewish sentiment not only in Germany, it was there in Russia, it was there in France. तो हिटलर सबका काम कर रहा था, इसीलिए हिटलर को टॉलरेट करते गए कि भाई हमारा एक काम तो कर रहा है ये। तो हिटलर जूस को मारने का जो ठेका था सब देशों ने हिटलर को दे दिया था कि भैया तुम्हारा एफिशिएंसी ज्यादा है, आउटसोर्सिंग, इनको अच्छे से खत्म कर दो, ठीक है। और बेसिस वही था नेशनलिज्म का, क्योंकि यूरोपियन से हिटलर कोई अलग थोड़ी था। तो इट्स नॉट दैट ओनली हिटलर वाज रेसिस्ट, रेसिज्म इज यूरोपियन कल्चर। हिटलर को बस स्केपगोट बनाया गया। तो हिटलर तो मतलब if anybody is complicit, others, all governments are, then they become, today they become the most compassionate towards the Jews, which is again their drama, ठीक है। in fact जितने ज्यूज यूरोप में मरे उतने ज्यूज को कभी भी पैलेस्टीन में भी नहीं मारा गया होगा, क्योंकि ईस्टर्न वर्ल्ड में वैसा कल्चर था ही नहीं। सो ज्यूज एंड पैलेस्टीनियंस वेयर लिविंग इन पीस, बट ब्रिटिश स्टार्टेड डिवाइड एंड रूल, just like Hindus and Muslims were living in peace here. That is why in principle Gandhi and Nehru, they opposed the creation of Israel and these type of things, because they were doing the same thing which was happening. So जो नेशनलिज्म है वो कैसा होता है, होमोजेनाइजिंग होता है। नेशनलिज्म में स्कोप फॉर अदर्स का टॉलरेशन नहीं होता, और हमेशा नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स विल लीड टू जेनोसाइड, इट विल लीड टू एथनिक क्लिंजिंग एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट और लिखिए। कुछ लिखा है था क्या मैंने? ओके, तो लिखिए व्हाट इज द डिफरेंस इन नेशन स्टेट एंड। मैम, यस मैम, UCC is also a type of a step toward homogeneity. no, that is for women empowerment. UCC, Uniform Civil Code. होमोजेनिटी नहीं है भाई, वो मुस्लिम बहनों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उद्धार के लिए मोदी जी की योजना है, वो होमोजेनाइजेशन नहीं है। दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट मोदी जी स्टाइल। मतलब मोदी जी वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं, और उन्होंने प्रूफ किया। सबसे पहले उन्होंने लिया सेल्फी विद डॉटर से स्टार्ट हुआ, फिर बेटी बचाओ आया, फिर वो गैस वाला कुछ था उज्ज्वला आया, फिर हम लोग तो आभारी हैं मोदी जी रिजर्वेशन ले आए, ठीक है। बस 29 तक हम भी पढ़ाएंगे, फिर थोड़े पढ़ाएंगे, ठीक है। और अब मुस्लिम बहनों के लिए ले आए। ये मोदी जी वो यूनिफॉर्मिटी नहीं, कभी नहीं कहना है,
क्या कहना है? वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इसी से सब लोग एक बड़े काम को कंट्रोवर्शियल कर देते हैं, और कौन कर देता है? यही सब न्यूज़पेपर वाले, जिनको समझ तो है नहीं। ठीक है, अभी समझ में असली यूसीसी क्यों आना चाहिए। और पहले तो जुडिशरी ने किया ट्रिपल तलाक के बाद, मोदी जी को पता है जाते जाते और कोई वुमेन एम्पावरमेंट के लिए करेगा नहीं। ठीक है, तो सारा एम्पावरमेंट करके जाएंगे। ठीक है, अभी राम मंदिर बना, एक सीता मंदिर भी बनेगा अभी। हाँ, सीता मंदिर नहीं बनवाया उन्होंने, बन रहा है नेपाल में। अच्छा, हाँ, वही सीता मंदिर भी जरूरी था। ठीक है, चलो, तो चलिए अभी आगे बढ़िए। वही पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। यस, अब हम कहा क्वेश्चन, जब तक तुम्हारे पास माइक आ रहा था तब क्वेश्चन लिख लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशन स्टेट एंड सिविलाइजेशनल स्टेट? और एक और क्वेश्चन समझने के लिए लिख लो, व्हाई इंडिया इज कॉल्ड सिविलाइजेशनल स्टेट? बताइए। मैम, जो आपने यूसीसी बताया ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, तो मैम कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी इससे हर्ट क्यों हो रही है? क्या हो रही है? स्पेसिफिक कम्युनिटी हर्ट क्यों हो रही है, मतलब वो क्यों कह रहे हैं कि हम कोई नहीं हर्ट हो रहा है, मीडिया से मत जाओ, ये सब सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़ो। मैम इंडियन एक्सप्रेस में भी आता अरे है। इंडियन एक्सप्रेस ही तो कह रहे हैं मत पढ़ो। इंडियन एक्सप्रेस कभी नहीं पढ़ो, सबसे बेकार पेपर है। यू थिंक इट्स अ गुड पेपर? एक ही पेपर पढ़ो, पंजाब केसरी। क्या बुराई उसमें? पेपर नहीं है क्या वो? पेपर पंजाब केसरी पढ़िए। हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो। हमें तो कभी इंडियन एक्सप्रेस में कुछ समझ नहीं आया, मतलब कैसे तुम लोग समझ लेते हो? रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस इज अ टॉर्चर। मत पढ़ो, बट आई थिंक इट्स अ यूजलेस पेपर। चलो, मेरा तो विश्वास है पूरा। और ये सब मीडिया वाले क्या करते हैं? ये ओपिनियन बनाने की कोशिश करते हैं और इनको पैसे दिए जाते हैं, इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ो। अभी इंटेलेक्चुअल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, क्या हमसे पढ़ो? एक शुभ भारत टाइम्स हम लोग की वेबसाइट पे, वो तो बताना ही भूल गए। शुभ भारत टाइम्स पढ़ना है हम लोग, उसके बाद आईआर के आर्टिकल्स उसी में डालेंगे। ठीक है, आज शुभ भारत टाइम्स पढ़ना है, कोई अखबार नहीं पढ़ना है। ठीक है, बिना मतलब एडवर्टाइजमेंट, पैसा लगता है हम लोग का। ठीक है, और एक्सप्रेस वाले बढ़ाते जा रहे हैं, हम तो अब एंटी एक्सप्रेस हो गए। ठीक है, दे हैव इंक्रीज। एक जमाने में जब चलता नहीं था उनका पेपर तो बहुत ही सस्ते में एडवर्टाइजमेंट होता था। ठीक है, फिलहाल अभी तो पेपर भी बेकार है वो। एनीवे, अभी चलो जल्दी आओ। वैसे अगर सीरियसली पूछा जाए, विच पेपर हैज गुड आर्टिकल्स फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स में हमेशा आपको आईआर के पर्सपेक्टिव से सबसे अच्छा, और पेपर की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, विच कैन बी इजिली अंडरस्टूड। तो हिंदुस्तान टाइम्स, मतलब आई रीड हिंदुस्तान टाइम्स। खरीदते तो हिंदू एक्सप्रेस है लेकिन पढ़ते नहीं, तुम लोगों के जैसे ही करते हैं। ठीक है, बट एचटी में अच्छे आर्टिकल्स आते हैं आईआर के पर्सपेक्टिव से, और डेली आते हैं वही। लेकिन अब तुम लोग ऐसा टाइम तो है नहीं पढ़ने का, तुम अभी यहीं पे ध्यान दो। चलो, तो अब हम देखते हैं सिविलाइजेशनल स्टेट वर्सेस नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट के आगे लिखो टेरिटोरियल आइडिया, और सिविलाइजेशनल स्टेट के आगे लिखो कल्चरल आइडिया।
लिखो इंडिया यूज टू बी, इंडिया क्या है, इंडिया, चाइना यूज टू बी civilizational states. So, is Akhand Bharat a territorial idea? It's a civilizational. It can be realized only in civilizational terms, not in territorial terms. ठीक है, तो we were discussing ideologies. और ये बीच में इतना डिस्कशन कहां से आया, नेशन स्टेट, मॉडर्न टाइम्स। तो आइडियोलॉजी मैंने स्टार्ट किया था आपको बताना कि सबसे पहले आइडियलिज्म, देन डिवाइन राइट्स, देन इन मॉडर्न टाइम्स केम आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, अगेंस्ट लिबरलिज्म केम द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, तो फिर से लिखो सिलेबस कंटिन्यूड, लाइन खींचो, और लाइन खींच के अब फिर से सिलेबस पे जाते हैं। ठीक है, तो सिलेबस में हम लोग क्या समझ रहे थे, आइडियोलॉजीज, लिबरलिज्म लिख लिया, लिबरलिज्म के बाद कौन सी आ गई, सोशलिज्म। ठीक है, वॉज मार्क्स सोशलिस्ट, यस। तो सोशलिज्म में एक यूनिक सोशलिज्म है जो मार्क्स से लिंक्ड है, तो इसलिए सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म पढ़ना है अपने को, सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म। अब जब सोशलिज्म मार्क्सिज्म किसकी आइडियोलॉजी है, लिखो पहले, इट इज आइडियोलॉजी ऑफ द डिसएडवांटेज्ड वीकर सेक्शंस। गरीबों से वोट लेना है तो क्या करना होगा, सोशलिज्म, सोशलिज्म बोलना होगा, जैसे समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव। ठीक है, तो सोशलिस्ट है। ठीक है, लेकिन जब सोशलिज्म, स्पेशली व्हेन मार्क्सिज्म विल कम, मार्क्सिज्म इज अ वेरी रेवोल्यूशनरी आइडिया, दे सजेस्टेड टू चेंज द वे ऑफ लाइफ, then Marxism will become the basis for feminism. ठीक है, तो अब ऐसे लिखो फेमिनिज्म, देखो फेमिनिज्म is inspired by Marxism. जब मार्क्सिज्म, तब आप फेमिनिज्म पढ़ेंगे, रेडिकल फेमिनिज्म, चेंजिंग। तो मार्क्सिज्म सेज एंड कैपिटलिज्म, फेमिनिज्म सेज एंड पैट्रियार्की, फाइन। एंड देन द लास्ट आइडियोलॉजी इज गांधीज्म। तो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके या तो लिबरलिज्म से, या सबसे ज्यादा मस्ट है फेमिनिज्म से। ठीक है, अब सिलेबस को अगर हम फर्दर लेके जाते हैं तो आइडियोलॉजी टॉपिक खत्म होता है, आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है थियोरीज ऑफ स्टेट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक शुड बी थियोरीज ऑफ स्टेट। तो जो इसमें आइडियोलॉजी का ही एप्लीकेशन है। ठीक है, तो नथिंग मच टू, अब से अगर हम देखें थियरीज ऑफ स्टेट, तो लिबरल, नियो लिबरल, अब एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है नियो लिबरल स्टेट, बिकॉज फ्रॉम 1990s स्टेट्स पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन नियो लिबरलिज्म। अब नियो लिबरलिज्म क्या चीज है, नियो लिबरलिज्म इज अगेंस्ट वेलफेयर स्टेट। तो नियो लिबरलिज्म को माना जाता है रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट या एलपीजी मॉडल। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एलपीजी मॉडल के बारे में।
मार्क्सिस्ट भी एग्जाम में काफी हमेशा पूछा जाता है, इसलिए होल्डिंग grasp on political theory is grasping Marxism. In fact, political theory, political analysis starts with Marx. मार्क्स से पहले किसी ने एनालिसिस नहीं किया. जो चीजों को क्रिटिकली एनालाइज करने का ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ, दैट स्टार्ट्स विथ मार्क्स. फाइन. प्लूरलिस्ट से ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन हमेशा एग्जाम के लिए पढ़ना है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट. तो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में हम क्या पढ़ते हैं? ये सब वेस्टर्न स्टेट्स हैं. पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में वी स्टडी अबाउट states in post-colonial societies like India. In post-colonial state, the most important contribution is of Hamza Alvi, theory of overdeveloped state. ठीक है, तो अब पहले स्टेट में एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक तो लिखो नियो लिबरल स्टेट, और नियो लिबरल स्टेट के बाद जो सबसे ज्यादा है वो है अपना पोस्ट कॉलोनियल स्टेट. क्योंकि ये सब आप आइडियोलॉजी में ही पढ़ लोगे, ठीक है. और पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में कौन सी थ्योरी? Theory of overdeveloped state by Hamza Alvi. Hamza Alvi, Hamza, Hamza Alvi, ALWI. Now, theory of state is closely connected with theory of power. क्योंकि state और power, one who has the power is actually state. Fine. तो theory of state पढ़ा या theory of power, it is one and the same thing. Difference क्या है? Here we study structure of state, and here we study how state exercises power. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो थियोरी ऑफ पावर. अब थियोरी ऑफ पावर में टॉपिक्स आएंगे हेजेमनी, आइडियोलॉजी, लेजिटिमेसी. तो हेजेमनी ये सब हम ग्रामसी के साथ ही करते हैं, और थियोरी ऑफ आइडियोलॉजी तो उसमें लेजिटिमेसी वाले आते हैं टॉपिक. लेजिटिमेसी, व्हाट इज लेजिटिमेसी, व्हाट इज अथॉरिटी, रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी, ऐसे कॉन्सेप्ट्स. पावर के कॉन्सेप्ट में फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फूकोस थियोरी ऑफ पावर. हैव यू हर्ड अबाउट मिशेल फूको? तो फूको की स्पेलिंग लिखो FOUCAULT. फ्रेंच स्कॉलर है तो इनकी स्पेलिंग थोड़ी अलग होती है. इंग्लिश में बोलोगे तो फुकॉल्ट टाइप लगेगा, बट इट इज फूको, मिशेल फूको. मिशेल फूको का फेमस कॉन्सेप्ट है पावर इज एवरीवेयर. और मिशेल फूको मतलब पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कॉलर है. पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच हमको पढ़नी होगी. पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच. अब थियोरी ऑफ पावर, हु एक्सरसाइजेस पावर. दिस थियोरी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी. हमेशा क्वेश्चन आएगा थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी से. इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी. व्हाट इज डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी?
नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है वो होता है, ये सब क्लासिकल है, जो मेजर स्टार्ट होता है कॉन्टेम्परेरी में, थियोरी ऑफ जस्टिस बाय रॉल्स, ठीक है, विच यू ऑल्सो स्टडी इन योर एथिक्स। तो जब हम रॉल्स थियोरी ऑफ जस्टिस पढ़ेंगे, और इसी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कम्युनिटेरियनिज्म, कम्युनिटी स्पेसिफिक, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस लिबरलिज्म वर्सेस कम्युनिटेरियनिज्म। तो जो ये यूसीसी डिबेट है, तो लिबरलिज्म वर्सेस कम्युनिटेरियन, तो जो कम्युनिटेरियन होगा वो कहेगा कि यूसीसी शुड नॉट बी देयर, जो लिबर्टेरियंस होंगे दे विल से वन साइज वन फॉर्म ऑफ दिस थिंग, यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पर्टिकुलरिज्म। अगेन in justice theory we have to also see her Rawls other critics। तो justice की theory में हमको क्या क्या पढ़ना है, एक तो Rawls theory पढ़नी है, सेकेंड कम्युनिटेरियन theory, आपने इंटरनेट पे माइकल सैंडल इन लोगों को सुना हो शायद, हार्वर्ड प्रोफेसर्स, फाइन। इसी में हमको करना होगा फेमिनिस्ट थियोरी, या आप एथिक्स में पढ़ते हो, एथिक्स में एक कंसेप्ट आता है एथिक्स ऑफ केयर। एथिक्स ऑफ केयर इज अ फेमिनिस्ट कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, ओके। देन वी विल ऑल्सो स्टडी अमर्त्य सेन्स थियोरी ऑफ जस्टिस एज अ क्रिटिक ऑफ रॉल्स थियोरी ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट, इक्वालिटी टॉपिक। So in equality topic, we will have to study what concepts. First ऐसे लिखो क्या क्या concepts इसमें आने चाहिए। Rawls theory of democratic equality. Rawls theory of democratic equality. Next, Dawkins theory of equality of resources. Then Amartya Sen's theory, equality of capabilities. और लास्ट है थियरी ऑफ राइट्स। थियरी ऑफ राइट्स में एग्जाम में पूछा जाता है मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म क्या है? मल्टीकल्चरलिज्म लिखो, इज अ आइडियोलॉजी which aims at protection of minorities. तो ये आपका, हाँ, और फिर एक लास्ट टॉपिक होता है मीनिंग एंड अप्रोचेस। इसमें मेथडोलॉजीज, रिसर्च मेथडोलॉजीज की स्टडी होती है। तो मीनिंग एंड अप्रोचेस में सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना पड़ता है बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म। So that was a syllabus of paper 1, and I think syllabus will take a lot of time. We will start, and I will start with international relations, and I'll keep on telling about the syllabus. 1B का फिर किसी और दिन करेंगे in some extra class. यही एक्चुअली मेन तो थियोरी की टेक्निकलिटी समझनी है, ठीक है। तो अब पहले कुछ सेकेंड पेपर ऐसे खोल दो, हाँ, और खोल दो, हाँ यही। तो यहां पर 2 चीजें लिखी हैं, स्टूडेंट्स हमेशा उसको कंबाइन कर देते हैं। एक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स
और दूसरा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। दोनों एक चीजें नहीं, ठीक है। तो कभी कभी जैसे थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, लेकिन एग्जाम में भी लोग ध्यान नहीं रखते हैं, कभी उसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स लिख देते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आईआर लिख देते हैं, जबकि ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी कंपैरेटिव नहीं स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहाँ गया, यस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ये वाला जो पार्ट है, चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, ये वर्ल्ड पॉलिटिकल इश्यूज हैं। इस और इससे ऊपर का जो है वो थियोरी है, वो जब हम वो थियोरी कर लेंगे तब थियोरी करेंगे। अभी हम लोग करेंगे चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, और ये पोर्शन एंड ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये कैसा है, इंटरलिंक्ड है। जैसे वहां पे सार्क होगा, यहां पर इंडिया एंड साउथ एशिया होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे, ओके। तो अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक, हम जिसको आपको कहा था मैंने शीट्स पे लिखो, वो लिखो और उसके पहले सब टॉपिक समझो, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल स्टार्ट इज, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस आप अपनी कॉपी में लिखे या पेजेस में, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस में फर्स्ट थिंग यू राइट, इट इज अ यंगेस्ट डिसिप्लिन, एंड पॉलिटिकल साइंस ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है। इंटरनेशनल रिलेशंस इज यंगेस्ट डिसिप्लिन, ठीक है। एंड व्हेन द, पहले सुनो फिर लिखो, लिखाने वाला काम हम करेंगे, तो सुनने वाला तुम लोग करो, ठीक है। तो व्हेन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस स्टार्टेड, it started after First World War, fine, in the year 1919, and the first chair of international relations was established in University of Wales, and chair का मतलब है post of a professor, and the first post or first chair used to be called as Woodrow Wilson chair। तो अब ये सब चीजें क्या हैं इसको समझना है, इसलिए पहले लिखो, यंगेस्ट डिसिप्लिन लिखा, अब लिखे द फर्स्ट चेयर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस started in 1919 at University of Wales, known as Woodrow Wilson chair। अब लिखो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डिसिप्लिन, व्हाई वी स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस। व्हाट इज द पर्पस,
पर्पस है, लिखो राइट, पर्पस इज टू establish peace in international sphere. अब ये पर्पस क्यों है?